So now we will learn about operators. Okay, like every language have operators. In Python also we have some operators. Okay. So most common operator कौन? Number one, arithmetic operator. Okay, arithmetical operator. तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या आ जाएगा आपका? प्लस, माइनस, multiplication, division. You also have modulus, and you have this thing exponent. Okay, then you also have this thing called floor division. So there are two more additions what you have already learned. आप लोग पहले ये सब पढ़ चुके हो, मगर ये दोनों चीज नया है. क्या क्या? This thing and this thing. Double star, double slash. Okay. Double star is exponential value. And double slash is called floor division. Floor division. Okay. So suppose I want to display x to the power y. X to the power y. So what I'll do, I'll simply write x double star y. प्रवीण समझ में आया आपको? अगर आपको पावर निकालना है, ठीक है, मान लो 2 to the power 5 निकालना है आपको, 32 बनता है, तो आप क्या लिखोगे? 2 कितनी बार मल्टीप्लाई करना है ना? 5 बार. समझ में आया? ठीक है जी. एक्सपोनेंशियल वैल्यू. ओके, किरण क्लियर? ओके, Yes, sir. now let's learn something about floor division. Floor division. Okay, so simple slash will provide you value with the decimal fraction. Fractional value will be provided to you. Okay, so when you say 10 divided by 4, 10 divided by 4, you will get, कितना मिलेगा सुजन? It will be 2.2. 2.5. 2.5. ओके प्रवीण, जब भी आप एक सिंगल स्लैश यूज करोगे, द वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड टू यू इज इन डेसिमल पॉइंट. ओके, सो स्लैश प्रोवाइड्स द वैल्यू, प्रोवाइड्स डेसिमल वैल्यू. क्या देगा वो? डेसिमल वैल्यू. ओके, sometimes we don't need the decimal. Sometimes we actually don't need the decimal. हमको डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए. ठीक है, so in that case you will use double slash. Okay, what double slash will do? Double slash will give you the floor value of 2.5. ठीक है, जावा में पढ़े थे सिप्रा, फ्लोर वैल्यू. Yes, sir. ओके, तमन्ना फ्लोर वैल्यू मनो अच्छी मैथड फ्लोर. Yeah. So it will directly get you to the lower value. 0.5 को रिमूव कर देगा, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देगा. आदिति बेटा क्या करेगा ये? Remove. पॉइंट को रिमूव कर देगा. पॉइंट रिमूव करेंगे तो बचा क्या? 5. ठीक है, आपने पॉइंट रिमूव कर दिया, आपको अच्छा, तो उसके बाद हाँ जी, समझ में आया आपको? यस सर. ठीक है, कभी कभार आपको क्या है, पॉइंट नहीं चाहिए, तो क्या करोगे आप? डबल स्लैश यूज कर लोगे पाइथन में. आदित्य आना, संस्कृति क्लियर? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. So this is floor division.
ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट अदर, अदर हम इसके बाद हम अब नॉर्मल तो आपका ये तो मालूम ही है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या देगा? वो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर देता है आपको। ठीक है, रिमाइंडर क्या है? 2, है ना? 10 को डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या देगा? ये आपका रिमाइंडर। ठीक है, नाउ मैथ्स वाला ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर चला गया। अब उसके बाद क्या आता है? नॉर्मली क्या आता है? कंपैरिजन ऑपरेटर, नंबर टू। क्या आया? कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, comparison operators, and in most of the language you know them as relational operators, relational operators। तो कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर करते क्या है? ओके, दे compare the values, compare the values and gives what kind of boolean result। क्या देगा वो देगा boolean result, boolean देगा, boolean ट्रू फॉल्स वैल्यू। ठीक है, ओके। तो व्हाट आर द रिलेशनल ऑपरेटर? जैसे दूसरे लैंग्वेज में होता है वही है। क्या है? ग्रेटर देन, ओके, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। सुजन क्लियर? Yes, sir. नॉट इक्वल, इक्वल, ओके। ये है ग्रेटर देन, इक्वल, ये होगा आपका लेस देन इक्वल, दिस इज योर ग्रेटर देन एंड लेस देन। ओके, कृष्णा बेटा क्लियर? कंपैरिजन ऑपरेटर जावा रे जा जा अच्छी एटी से अच्छी। Okay, sir. ओके, ना थर्ड थिंग, normal thing is assignment, this is very common ना। असाइनमेंट ऑपरेटर कोड किए कोई करेगा? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? सिंपली इक्वल टू, राइट? Right. इक्वल टू, यू हैव a variable here and a value here, so value travels from right side of the equal to the left part। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता है, इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। कोई भी ऑपरेशन करो, वेरिएबल में स्टोर करना है इक्वल टू, दिस इज वेरी कॉमन। ठीक है, इक्वल टू। देन रिलेशनल के बाद हमेशा इसका नाम आता है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ओके संस्कृति, व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर देयर इन पाइथन? संस्कृति, Okay, sir. नेम द लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल इन पाइथन। And or नॉट, not. यस, एंड और नॉट, द सेम, Hmm. द सेम इन जावा, राइट? ओके, जावा एंड सी लैंग्वेज। अदिति बेटा सी लैंग्वेज में आप क्या पढ़े थे? एंड, Yes. और नॉट, ये पढ़े थे Not. क्या? Yes, sir. पाइथन, पाइथन इन सिंबल्स को यूज नहीं करता है, पाइथन वर्ड यूज करता है, एंड, और, नॉट। No. ठीक है, बात समझ में आया? Yes, sir. राइट? तो सपोज x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 10। ओके,
तो आप बोलोगे कि क्या, कि प्रिंट x, ओके, नॉट इक्वल टू y एंड x लेस देन y, तो क्या रिजल्ट देगा? लॉजिकल ऑपरेटर को हम क्यों यूज करते हैं? ये नीचे आपने, मैंने जो एग्जांपल लिखा है, x नॉट इक्वल टू y एंड x लेस देन इक्वल टू x लेस देन y, so these two are relational operation, right? And these two relational operation are combined now. Okay, so you know, logical operators are used to combine. Okay, these are used to combine two or more relational expression. ठीक है, and result is boolean, and results in boolean, ट्रू फॉल्स रिजल्ट देगा। ठीक है, ओके, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एक्स नॉट इक्वल टू वाई एंड वाई लेस देन एक्स लेस देन वाई, सॉरी, बताओ अदिति बेटा क्या होगा? एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ये ट्रू है फॉल्स है? फर्स्ट थिंग, तमन्ना, इज इट ट्रू और फॉल्स? It's true. दिस इज ट्रू, थैंक यू। ओके, एंड दिस थिंग True. again true, so true and true will result in True. true. Remember, पाइथन में बुलियन, बुलियन इन पाइथन, बुलियन values in python are true and false. Very much different from Java. How the T and F here are capital. Python में T और F, true का T, false का F कैपिटल रहेगा। अदिति समझ में आया बेटा? ठीक है, जो बुलियन रिजल्ट होता है ट्रू एंड फॉल्स, वो कैपिटल रहेगा, आपका टी कैपिटल रहेगा, एफ कैपिटल रहेगा। ठीक है, प्रवीण समझ में आया आपका? जावा में क्या, यस सर, जावा में स्मॉल लेटर में रहता स्मॉल लेटर में आता है। है ना? पाइथन में ये पहला अक्षर आपका कैपिटल रहेगा। ओके, ठीक है, संस्कृति क्लियर? संस्कृति, यू नो एवरीथिंग? ओके, संस्कृति, व्हाट एल्स ऑपरेटर वी हैव? लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, व्हाट एल्स? Bitwise operator. हाँ, Bitwise operator. bitwise operator in python, we are not going to use that. Okay, फिलहाल तो नहीं। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर पर आउ कौन संस्कृति, आउ कौन जानिछ? संस्कृति, you already have learned. Sipra, do you remember something? So students, the next operator is membership operator. Membership operators are used to test if a sequence is present in an object or not. Okay, so there are two kinds of membership operator. One is in, another one is not in. So in returns true if a sequence with the specified value is present in an object. For example, okay, we have a list here. Here we have a list called name list. Okay, in the list there are some objects: Aditya, Aditi, Prem, Praveen, Grapes. So if I search for Sujan using the operator in, which is a membership operator, and it is checking if Sujan is a member of the name list or not. So we do not find Sujan here. So this will eventually result in false. This will get you a false result. Okay.
Likewise, if we check grapes, is grapes a member of name list? Yes, it's true. It will return true. Okay. So, like the in operator checks for a sequence if it is present or not, then there is another operator called not in. Not in. Not in is a membership operator that checks, that returns true when a specific value is not present in the object. Right. So, when we check for Tamanna in the name list, okay, the statement says Tamanna not in name list. This is true because we do not find Tamanna here. There is no Tamanna in the list. Okay. So membership operator checks if a particular item or sequence belongs to the object or not. Okay. I hope you are clear. So this is all for your what operators? Some known operators commonly used. Okay. We will continue tomorrow. if else पढ़ेंगे ठीक है चलो all the best everyone